व्हाट्सअप शुरू करते ही फोन बज गया. What's up everyone, here Vadapesh Kumar here. Welcome back to Boeing Boy, another brand new video and the first video on aviation since we started once again. So आज की वीडियो मैंने सोचा पहली वीडियो से ना थोड़ा धमाका सा कर देते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा बताते हैं आप लोगों को. So today we're going to be discussing about pilot salaries, but this is a COVID edition. How have our salaries been impacted by COVID is what we'll be discussing in today's video. So as you guys know, aviation is basically a travel and hospitality industry, right? अपना काम mainly travel का है. We take people from A to B. So because of COVID, the thing which suffered the greatest, I guess, was travel because people just did not want to get out of their houses. तो कोई travel नहीं कर रहा था. All the airplanes were on the ground. So जब 2020 में pandemic start हुआ था and we had our first lockdown, तब तो flights बिल्कुल ही खत्म हो गई थी. If you guys remember, 6 महीने तक literally there were no flights at all. We were all sitting at home for 6 months. And then उसके बाद भी फिर we had lockdown 2, lockdown 3. Basically overall things were not going well for the travel industry for the last about 2.5-3 years. As a result, obviously the airlines were making losses. So as of now currently, except the last quarter, उससे पहले के 10-11 quarter, every airline has been in really bad losses because people are not traveling, their aircraft are sitting on the ground. And now when the airline is in loss, it does not really make sense for the airline to keep on paying their pilots their full salary while the pilots are not flying at all. So as a result, like 100 other jobs, we also suffered because of COVID and our salaries were also reduced by quite a bit. Okay, before we get to the pay cut kitna hua aur kitni salary kati hai, which was different for every airline, I want to tell you guys about something very nice which happened during the pandemic. I know बहुत सारी बुरी चीजें हुई हैं, but एक बहुत अच्छी चीज हुई. None of the Indian airlines shut down. First of all the airlines survived the whole entire pandemic, all the 3 lockdowns successfully. Also, the best part is not कि कोई airline बंद नहीं हुई. The best part is that none of the airlines let go of even a single pilot. No pilot lost their job during this pandemic. Airline ने सबको payrolls पे रखा, चाहे salaries कम कर दी हो, भले salary दी ना हो, but no one was fired. And that I think is a very good thing. I would really like to appreciate all the airlines for doing that. Kudos to all of you. Good job. Now before I tell you guys कि हमारी salary कितनी कम हुई थी and I give you exact figures, I would like to first tell you कि pilot की salary होती कैसे है. Like what is the basic structure of the salary? Because structure बताऊंगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि salary कम कैसे हुई. So basically, like every other salaried person would know, सैलरी में होती है एक बेसिक सैलरी प्लस उसमें और चीजें फिर ऐड ऑन होती हैं सच एज HRA, अलाउंसेस एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ. सो आवर बेसिक सैलरी हैज एन एडिशन ऑफ समथिंग नोन एज फ्लाइंग अलाउंस व्हिच इज बेसिकली द फ्लाइंग दैट वी डू. हमें उसका हर घंटे का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है. नाउ दिस अलाउंस इज व्हाट हैज चेंज मेजरली. पहले क्या होता था, मोस्ट एयरलाइंस हैड अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पायलट्स वर गिवन अ फिक्स सैलरी टिल 70 आवर्स और 75 आवर्स. उसका मतलब क्या हुआ, इवन इफ द पायलट फ्लाइज 0 आवर्स इन अ मंथ or if you fly 70 hours in a month, he would get the same salary. However, if you fly more than 70, then आपको overtime मिलेगा and you would get more money. So basically fixed salary plus flying allowance which is fixed till 70 or 75 hours and उसके ऊपर फिर overtime की salary. कोविड में क्या हुआ, flying बहुत कम हो गई. As a result, what the airlines decided to do was basic salary was kept constant. इसमें कोई changes नहीं आए because the flying went so low. What most airlines did was they removed this clause कि 70 hours तक या 75 hours तक तुम्हारी salary fixed है. What they did was जितने घंटे fly करोगे उतने घंटे की salary मिलेगी. So basically what pilots started to get was basic salary plus however many hours you fly, you get paid for that. Now this is the path that some airlines adopted. Some airlines adopted the path of simply जितना fly करोगे उतने पैसे मिलेंगे and they decided an hourly rate. अब बात करते हैं कुछ actual figures, actual numbers की. तो pre COVID I'm sure आप लोगों को idea होगा ही कितनी salaries होती है. नहीं है idea तो you can click on the link here wherever जहाँ पे भी लिंक आएगा देख लेना. In that video I have told you guys the pre-COVID salaries. तो अभी post-COVID salaries उसमें से सिंपली 40% माइनस कर दो. सिंपल एज दैट. ऑलमोस्ट सबकी सैलरीज वर 40% लेस दैन दे वर प्री कोविड. बट ये मैं बात कर रहा हूँ अभी की. जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब चीजें थोड़ी हड़बड़ी में थी. एज अ रिजल्ट कुछ एयरलाइंस में सैलरीज बंद ही हो गई थी. फ्लाइंग बंद, सैलरी बंद, जीरो. किसी के अकाउंट में कुछ आ ही नहीं रहा है. सम एयरलाइंस वर पेइंग देयर एम्प्लॉइज अ वेरी लिटिल अमाउंट. इतना लिटिल अमाउंट के अंदर बोलते हुए भी शर्म आती है. एंड सम एयरलाइंस, स्पेशली द वन दैट आई वर्क फॉर, amazing, they kept up our salaries were paid on time. इंडस्ट्री के हिसाब से कट्स हुए सैलरीज में, बट आवर सैलरीज वर पेड every 26th
ऑन टाइम, कुडोज टू दैट टू माई एयरलाइन। स्टार्टिंग में हर एयरलाइन का बहुत ही डिफरेंट था बिकॉज किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है यार। तो कुछ एयरलाइंस में सैलरी आ ही नहीं देती, सम एयरलाइंस वर पेइंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एंड about 50% ऑफ what we used to get। तो बेसिकली पते की बात ये है कि कोविड में आर सैलरीज वर सिंपली रिड्यूस्ड बाय 50%। सो कैप्टन्स वर गेटिंग समवेयर क्लोज टू अबाउट 3 lakh rupees a month and first officers were getting somewhere close to about 1 lakh rupees a month। These are very ballpark figures, इसके आगे पीछे था सब एयरलाइंस का। However फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेन बात तो वो है आगे क्या होने वाला है। Now things have started to improve quite a lot, passenger loads have picked up, airports are full again, flight full जा रही है फिर से सारी। तो अभी hopefully the salaries are going to be revised again। Currently I can tell you इंडस्ट्री में it's about 40% पे कट हर एयरलाइन में, somewhere close to about 40% का सैलरी कट अभी भी चल रहा है। बट अभी पैसेंजर लोड्स बढ़ रहे हैं, एयरलाइंस आर रिकवरिंग देयर लॉसेस। इन द लास्ट क्वार्टर स्पाइसजेट एंड इंडिगो एक्चुअली डिक्लेयर्ड प्रॉफिट्स। तो आने वाले टाइम में, आने वाले करीब 6 महीने आई गेस, थिंग्स शुड स्टार्ट गेटिंग बैक टू नॉर्मल एंड आवर ओरिजिनल सैलरीज शुड बी रिवर्टेड। ऑल्सो वन मोर थिंग टू ऐड हियर इज द 2 अपकमिंग न्यू एयरलाइंस इन इंडिया, Akasa and Jet Airways. Both of them are restarting their operations. Super pumped for that because a new airline is always a very good thing for the industry. आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सब पायलट्स के लिए। So जब आकाशा और जेट एयरवेज आएंगी, they will come back with normal salaries because they cannot come back with COVID salaries because वो कोविड में ऑपरेट कर ही नहीं रहे थे। As a result सब लोग वहाँ भागेंगे because उनकी सैलरीज ज्यादा होंगी। So to match up to that, existing airlines will have to increase their salaries, bring it back up to at least pre-COVID levels। It's been a while, I saw a big number on the salary slip, but that was about it for this video। I hope you guys got to know हमारी सैलरी कितनी कम हुई है, हमारे दिल में कितना दर्द है। ऑल्सो बिफोर वी फिनिश, एक दो कहानियाँ जो मैंने सुनी है। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी यूट्यूब पे। क्वांटस के एयरबस A380 के कैप्टन्स, लाइक सीनियर पीपल, वेरी सीनियर पीपल विद thousands and thousands of flying hours, they were driving buses। इंडिया में also I heard these stories, I don't know कितनी सच हैं ये, but I have heard that one particular airline's first officers, because they were not getting their salaries, they were forced to drive Olas and Ubers। अब I don't know ये कहानी सच्ची कितनी है, but hopefully things are getting better now and soon we should be seeing more money in our bank accounts। Anyways, with that I would like to end this video। I'll see you guys in the next one। Thank you so much for watching।